This is Pankaj Chandra Sinha, Assistant Professor, CMET Group of Institution, Patna. In this video, today I am discuss what is electronic soldering. It is very important for those students who study in basic electronics. Now, what are we taken about this video? First, what is soldering? Why do what do I need to solder the electronics? Third, what is the soldering iron? Fourth, what type of solder should I use? Fifth, what is flux? Sixth, how do I soldering? Sixth, in practical, how to soldering? We can see that. Now, next, first point, what is soldering? Soldering is the joint of two metal surface mechanically and electrically with the use of the metal called the solder. Solder secure that the connection so it does not break lot loss during the vibration on the other mechanical forces. It also prevent the electrical connecting so that the electronic signals can travel through the connection without interrupt. The soldering is a material used to soldering iron. Flux is used to clear and prepare the surface, which allow to maintain the solder to flow and bond with the metal surface. Now next question, what do I need to solder in electronics? When the soldering in an electronic construct con- connect to connect the point that is called the pad in generally need to the following. First, a soldering iron capable for reaching the melting point of the solder. Second, wire solders which are without a flux core flux if their wire should does not include the flux core or if the additional flux is needed. Next, what is soldering iron? A soldering iron is the hand tool using for soldering two metal surfaces together and it is simplest form. It consists of the metal tip and heating element that bring the tip up to the soldering of the temperature and isolating handle to an insulating handle to allow surface holding of the soldering iron and plug from either the well outlet or to the soldering iron station. Here you can see that how to solder a component in the PCB that is called circuit board. Here we can see that the tip of the soldering iron. Now the this is the circuit board and this is the copper pad on the board. This is the basic lead of the component, that is a lead for component, and this is the soldering wire. Now here you can also see that one of the PCB, that is a circuit board, and this is the soldering wire, soldering pad and the lead. Now bounded that there are the option that providing the better control over the soldering iron temperatures and heat response to the time taken the heat against after the soldering. These soldering tips, which are metal leg that is reset against that of the heating element and other which are integrated the heating element in the categorized. Here you can see that the working area of the tip, that is to be the free from the soldering prevent oxides. Next, construct with the high grade copper maximum heating conductivity and next plate with the properly iron plated from long life even that serve as a soldering condition. What is the difference between the soldering iron and the soldering station? On the low energy, the most appropriate from the habit it is to the soldering iron may be plugged directly into the electrical well layout, which prevent no control over the soldering iron that temperature just on and off with a soldering station. There's the soldering iron plugging into the soldering station from generally controlled over the temperature and other
features like set the temperature, memories, lockout, etc. Next point, what type of the solder I use? While there is a large variety of the different type of solder, at the most basic we need to choose that because of the lead of the free, that the diameter of the wire, flux core and solid wire, and the type of the flux, lead or lead free. This is the lead free soldering in generally the combination of the metal which are chosen from that of the best reliable conductivity. Lead of tin, a combination with the tin, has been the ma- maintenance of the electronic soldering since that inception. Lead has to the relative low melting points and readily weight flow, that is the flow which make that the process fast, easier and more foolproof. Next, what is flux? Think of the flux and preparing agent for that the solder process with metal surface together with the solder. Now, how do I soldering? I make sure that the surface of the soldering area are clean. Second, turn on the soldering iron, turn on the soldering iron and set the temperature about the melting point of the solder. Hold that the tip against the both the lead and the contact point oblique, that is called the pad from that 3 seconds. Now, few seconds touch the solder with a wire from that lead and contact point, that is called pad, and few time unit that sold the flow around that lead and contact. Now, in encryption that solder joint to make the sure there is a full cover over the contact area and their lead. If the necessary trim, if the necessary trim that the lead with the surface lead cut, do not trim into the soldering joint which can be damage the contaction. Now, next point, we can go in the practical lab and doing the practical how to solder. Perform the practical how to solder. Now, first of all, we preparing the pre-soldering. तो प्री सोल्डरिंग इसलिए करना पड़ता है कि इसके ऊपर जो है किसी तरह का ऑक्साइड्स अगर हो तो वो हट जाए। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ों को प्री सोल्डरिंग कर लेते हैं, हल्का हल्का इसको साफ करते हैं। एंड आफ्टर दैट ये वायर के ऊपर भी हल्का हल्का हम साफ कर लेते हैं। ठीक है, वायर के ऊपर भी हमने हल्का हल्का साफ कर लिया, जिससे कि इसके ऊपर जो भी ऑक्साइड्स होंगे वो हट जाएंगे। और आफ्टर दैट नेक्स्ट हम इस वायर को ट्रिम करेंगे, सोल्डरिंग आयरन हीट होने देंगे और हम फ्लक्स यूज करेंगे। यहाँ पे हमने फ्लक्स लिया है और फ्लक्स में हमने डिप कर दिया वायर को। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम यहाँ पे फ्लक्स को थोड़ा यूज करेंगे, तो प्लेन इससे हम फ्लक्स को यहाँ पे यूज करने के लिए एक टिप का यूज करेंगे। और हमने इस पर्टिकुलर सरफेस पे ये फ्लक्स को हमने लगा दिया। हियर वी कैन रेडी द फ्लक्स। तो यहाँ पे हमने फ्लक्स को इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे फ्लक्स हमारा प्रॉपर लगना चाहिए। वायर पे भी हमने फ्लक्स को लगा दिया बढ़िया से। आफ्टर देन हीटिंग द सोल्डरिंग वायर, सोल्डर को ऑप्टिमम टेम्परेचर तक हीट करना है जहाँ पे कि इजीली हमारा सोल्डरिंग वायर गल जाए। और इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे टिप पे रखा, अभी हीट नहीं हुआ है प्रॉपर, तो ये एक प्रॉपर हीटिंग होगा। ये हमारा सोल्डरिंग वायर प्रॉपर हीट हो गया, सोल्डरिंग रॉड, इससे वायर इजीली यहाँ पे सोल्डरिंग वायर मेल्ट कर जा रहा है। हम पहले प्री सोल्डरिंग करते हैं, वायर पे हमने पहले प्री सोल्डरिंग किया। दिस इज द प्री सोल्डरिंग। प्रॉपर सोल्डरिंग के लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले इसको प्री सोल्डरिंग करें, जिससे कि वायर के ऊपर सोल्डर स्टेबल हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा सोल्डरिंग ऑक्साइड प्रॉपर तरीके से नहीं हटा है। आफ्टर दैट हम प्री सोल्डरिंग करेंगे पीसीबी पे, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है उस पे हम जाके प्री हीटिंग करेंगे। और इसको हमने फिर से प्री सोल्डरिंग किया,
फ्लक्स लगा के, दिस इज द प्री सोल्डरिंग। आफ्टर द प्री सोल्डरिंग हम इसको प्रॉपर तरीके से प्लग इन करेंगे यहाँ पे वायर को, और वायर में ध्यान रखेंगे कि दूसरी जगह ये टच नहीं हो जाए। हमने हल्का सा हीट किया और 2 सेकंड के लिए इसे हमने छोड़ दिया। देयरफॉर दिस इज द परफेक्ट सोल्डरिंग। ये हमारा सोल्डर हो गया। उसी तरीके से हम बाकी को भी प्री सोल्डरिंग कर लेते हैं। बाकी पैड्स जितने भी दिख रहे हैं हमारे, वो सारे पैड्स को हम प्री सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो दिस इज द फाइनल प्रैक्टिकल फॉर प्री सोल्डरिंग। प्रॉपर फ्लक्स लगा के हमने इसे सोल्डर कर दिया। क्लियरली हटा के फिर से देख सकते हैं। अगर प्रॉपर फ्लक्स लगा होगा तो सोल्डरिंग हमारा प्रॉपर होगा। यहाँ पे हमने इस तरह से रखा और हल्का सा हमने सोल्डरिंग आयरन को टच कर दिया। नाउ दिस इज द प्रिपेयरिंग फॉर द सोल्डरिंग। ये हमारा फाइनल सोल्डर प्रिपेयर हो गया। क्लियरली ओके। तो दिस मेथड इज कॉल्ड द सोल्डरिंग प्रोसेस। ये बेसिक, जितने भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब प्रैक्टिकल करेंगे कंपोनेंट, तो इस तरीके से उन्हें सोल्डरिंग करना होगा ताकि वो इजीली सोल्डरिंग को समझ पाए। थैंक यू।